Welcome back to my lectures of class 11 physics. Here we are starting a new chapter, that is motion in a straight line. Okay, so here let us see first of all what is mechanics. Mechanics, it is the branch of physics which deals with the study of motion of an object. जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के मोशन से हम डील करेंगे, that comes under the branch of physics that is called as motion. Okay, now we have the different parts of mechanics. The first one is statics. So what is statics? This statics, it is the branch of physics, that is the part of mechanics which deals with the study of object at rest. मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसकी जो भी स्टडी होगी that comes under statics. The next one is kinematics. This is again the branch of physics and that is a part of mechanics which deals with the study of motion of an object. अगर statics रेस्ट के लिए था तो kinematics मोशन के लिए था. बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन. कि ऑब्जेक्ट मोशन में तो है बट व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, मतलब वहां पर फोर्स किसने अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट डज नॉट मैटर. ओनली द मैटर्स, द पॉइंट इज द मोशन. कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, सिर्फ उसकी स्टडी को क्या कहेंगे हम, दैट कम्स अंडर द काइनेमैटिक्स. Okay, and next one is the dynamics. Now what is the dynamics? It is again deals with the study of motion of the object. डील हम किससे करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है. बट हियर वी विल डील विथ द कॉजेस ऑफ द मोशन कंसिडरिंग द फैक्टर्स दैट कॉजेस द मोशन. मतलब यहाँ पर फोर्स किसने अप्लाई किया, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स था एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. वी विल कंसिडर ऑल दिस पॉइंट्स. Okay, the next one is the state of object. What is the state of the object? Here we have two different state of the object. Generally we have three, but first of all let us see the two one. The first one is the state of rest. अब हम कब बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, if that object does not changes its position with respect to time and surrounding. मतलब टाइम के साथ अगर वो ऑब्जेक्ट और साथ ही साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करता है, then you can say that the object is in rest. So the object is said to be in rest if it does not changes its position with respect to time and surrounding. Then the object is said to be in rest. Next one is the motion. What is motion? Object is said to be in motion if it changes its position with respect to time and surrounding. मतलब time और surrounding के साथ अगर वो object अपनी position change कर रहा है, then we are saying that the object is in motion. Suppose for example if I am standing here, means if the time passes and if I am not changing my position, if I am not moving with respect to my surrounding, then I am said to be in the state of rest. But if I am moving from one place to another, then with respect to time and with respect to my surrounding I am changing my position, then I am said to be in motion. Now here we have different types of motion. First of all, we will classify this motion based on the dimensions, or we can say based on the rectangular coordinates. The first one is the 1D motion, that is one dimension motion. Means if the object is moving in a single direction or along the one axis, then that is called as the 1D motion. For example, motion of a train that is moving in a straight line along a single axis. हम उसको मान लेते हैं कि वो x axis के along move कर रही है, then that is called as 1D motion. Next is 2D motion. 2D means two dimensions. The object is moving along two different axes. For example, we have motion of an insect on the floor. एक कोई भी insect है वो floor के ऊपर move कर रहा है, then that is moving on the two different axes as you can see here. Then that is called as two-dimension motion. Next one is 3D motion, that is three-dimensional motion. If an object is moving along the three different directions, मतलब वहाँ पर उसके तीनों component होंगे x, y and z, then we can say that the object is in 3D motion. You can see the motion of a kite in sky, that is the three-axis motion, or you can say that is 3D motion. So after looking at the classification of the motion based on the dimensions, we have another classification, that is the motion of the object based on the path. लेकिन इससे पहले हम एक और पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, that is the point mass object. एक point mass object क्या होता है, या फिर कभी भी हम बोलते हैं point object, वो point object actually होता क्या है. An object is considered as a point object if during motion it covers distance much greater than its own size. अगर कहीं पर भी during any motion if an object covers a distance which is very large as compared to the size of the object, then you can consider that particular object to be a point mass object. ये जो point mass object है ये हम consider करते हैं only for the sake of
सिंप्लिसिटी, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाए, इसलिए हम वहाँ पर ये यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, विल यू बिलीव इट? यस, यू कैन कंसिडर अर्थ टू बी अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. लेकिन कब? जब वो अर्थ सन के अराउंड अपने एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही होगी. इन दैट केस यू कैन से दैट द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी एज point mass object because the distance covered by that earth around the sun is very large as compared to its size. So in that case we can consider the earth to be a point mass object. Okay, so now classification based on the path. The first one is the rectilinear or translatory motion. So first of all we'll see what this rectilinear motion is. A motion in which a point mass body is moving along a straight line. मतलब यहाँ पर जो पाथ है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा then that is called as the rectilinear motion. अब ट्रांसलेटरी यहाँ पर लिखा तो क्या हमने? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन. इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ऑल्सो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. लेकिन अगर हमारे पास अदर देन द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी फाइनाइट साइज हो, अगर हम उसको कंसिडर करते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेटरी मोशन. दिस इज द मोशन फॉर ऑब्जेक्ट अदर देन द पॉइंट ऑब्जेक्ट. बोथ आर द मोशन इन द straight line. Okay, now the next one is circular or rotatory motion. As the name suggests here, circulatory or rotatory means the object is moving in a circular path. लेकिन वहीं पर अगर आपके पास point mass body है then that motion is called as circular motion. That is a motion in which a point mass object moves in a circular path. लेकिन वहीं पर अगर कोई भी body है other than the point mass object then that motion is called as rotatory motion. Okay, now the third one is the oscillatory or vibratory motion. You might have heard about this oscillation and vibration. What is this? In this type of motion an object moves to and fro or it moves back and forth. आगे पीछे की तरफ जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है then that is called as either oscillatory or vibratory motion. और जब भी ये मूवमेंट होता है that object is moving along a mean position. मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है वो इस तरह से आगे की तरफ गया and it is again moving in the backward direction. So it is crossing the mean position, that is the center position is called as the mean position. या फिर वो जो वाइब्रेशन होता है वो उस mean position के along होता है in a particular interval of time. मतलब जितना टाइम यहाँ पर लेगा सेकंड में भी अप्रोक्सीमेटली ये उतना ही टाइम लेगा. The best example is the pendulum. So when we are considering the motion of a pendulum then that motion is called as oscillatory motion. लेकिन वहीं पर अगर जो एम्पलीट्यूड है उस टू एंड फ्रो मोशन का अगर वो एम्पलीट्यूड हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंसीडर करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल मींस 10⁻⁻⁶, बहुत ही छोटे लेवल पर, देन दैट इज कॉल्ड एज द वाइब्रेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल यू माइट हैव हर्ड अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ अ मोबाइल. तो वहां पर आप उसको ऑसिलेशन नहीं बोल सकते बिकॉज यू कैन नॉट सी दोज टू एंड फ्रो मूवमेंट्स. दैट्स व्हाई यू आर कंसिडरिंग द मोशन ऑफ द मोबाइल टू बी द वाइब्रेटिंग मोशन एंड नॉट ऑसिलेटरी मोशन. सो द नेक्स्ट पॉइंट हियर वी हैव the frame of reference. So what this frame of reference is? This frame of reference is simply a reference point. मतलब जब कभी भी हमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन बतानी हो then we have to tell its position with respect to a reference point or with respect to the origin. जो origin हम एक rectangular coordinate system के अंदर बनाते हैं, क्योंकि हम जो भी point measure करते हैं x, y और z, we are always measuring it from the origin. वैसे ही हमें भी एक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैलकुलेट कर सके. दैट इज सेम एज दी रेफरेंस. बट यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको हमने एक अलग तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर रखा है. ओके, सो इट इज द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस वी हैव सीन दैट एक्स, वाई एंड जेड अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर. मतलब हमेशा हमें जो भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है वो एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होता है. If an observer will select a different reference point, then the position will get changed. So, attached to an observer having a clock with him. हमेशा अगर हम एक ऑब्जर्वर के साथ एक क्लॉक भी उसके साथ दे दें तो क्या होगा? With the observer can describe position, displacement, acceleration, etc. of a moving object. अगर ऑब्जर्वर के हाथ में वॉच नहीं होगी तो वो उसकी सिर्फ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बता सकता है. बट if an observer will have a watch in his hand, then he can also tells about the velocity and acceleration. That is what the frame of reference is. But simply ये एक reference point ही होता है which is attached with an observer having clock in his hand such that it can tell
और डिस्क्राइब द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ reference. What this inertial frame of reference is? This that frame of reference in which the Newton's first law of motion holds good. That is, wherever we have the uniform velocity, जहां पर भी uniform velocity होगी किसी भी object की या किसी भी body की, then we will say that the frame of reference attached with that person will be the inertial frame of reference. Similarly, अगर कहीं पर भी first law of motion अगर वहां पर उस particular system के लिए सही नहीं बैठता है, that is for an accelerated motion, जहां पर भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा वहां पर ऑब्वियसली बात है क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। सो वेरेवर देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन, इन दैट केस द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विद दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज द वन इन विच द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड्स गुड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज और फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ का मोशन है वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? ड्यू टू इट्स स्पिन देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे भी क्या होती है, रोटेट करती है। तो उस स्पिन की वजह से वहां पर जो उसका मोशन है दैट बिकम्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड हेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड्स गुड, एंड द सिस्टम now will have the non-inertial frame of reference. So this is what about the introduction part of the third chapter of class 11, that is motion in a straight line.